आज जो करा दे भाई, इंडिया से इतना ही पूछेगा, तुमको इससे ऊपर जाएगा ही नहीं वो। मोटामोटी ग्लोबल में नहीं जाएगा, इंडिया में तो भाई उन लोग का बहुत अंदर चला जाता है। इंडिया तो ऐसे करके रखा है भाई, वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग क्लियर होने ही नहीं देगा, हम लोग ऐसा कर दिया कि तुम जो भी कोशिश कर दो, नहीं 15-15 मिनट में इंटरव्यू दे लेके निकालता है। आज एक जन का लिया, 15 मिनट ही इंटरव्यू ले रहे हैं बस। फन ही नहीं है इंटरव्यू लेने का। 15 मिनट इंटरव्यू लिया बस, उसको उल्टा पुल्टा पूछा, बस हो गया। उसको बोला हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, वो उसको बोला डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, बोला हाउ वाज माय परफॉर्मेंस। बोला डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, बोला डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, हाउ वाज माय परफॉर्मेंस, बोला इट वाज बिलो, इट वाज अबव एवरेज, बोला पर उसको अबव एवरेज बोला तो ले सकते हैं इसको। तो पूछा कि पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, हाउ वाज माय परफॉर्मेंस सर। बोला इट वाज अबव एवरेज, मैं एचआर में डेली हूँ। बहुत गंदा गंदा सवाल पूछा था उसको। 15-15 मिनट का ही सवाल आपको पूछ रहा है बिग फोर में। इंडिया में तो ऐसे ही कर रहा है, 15 मिनट कोई डिपेंड करता है उसका इंटरव्यू का मूड कैसा है उस दिन। उसको मन है नहीं इंटरव्यू लेने का, नहीं है वो कुछ भी पूछ लेगा वो। कुछ भी पूछ के मतलब होता है ऐसे करके, उसको मन नहीं है मतलब ऐसा लग रहा था, ऐसे भी होता है। आदमी ऐसे करके उसको पूछ ले मन के, ऐसे करके कर दी। कोई को अच्छा से लेता है, पूरा लेता है, 1 घंटा लगा के लेता है, समझाता है भाई ये है वो है, तब उसका डिसीजन। 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया, 3 क्वेश्चन पूछा तो नहीं 3 सवाल का वो जवाब दे देगा। तो कम से कम 15 सवाल पूछेगा। जो देगा 3 सवाल है, 3 में से वो तो नहीं ना, 3 में सही भी कर सकते, 3 ऐसा कर लक क्योंकि 3 का 3 ही सही कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है 3 का 3 ही गलत कर दिया, तो बहुत लक एलिमेंट हो जाता है। तो उसको खाली 3 ही सवाल पूछता है सबसे ज्यादा। ये बहुत रिस्की होता है ज्यादा सवाल। एक तो याद रखिएगा इंटरव्यू में, हमेशा कोशिश करेगा आंसर शॉर्ट देने का, ऑलवेज ट्राई टू गिव शॉर्ट आंसर्स। व्हाई, व्हाट इज द बेनिफिट? ताकि वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सके। Yes, you would ask at least, you should be ready that they ask you at least 10 questions. If they ask you only 3 questions, then your selection is very less. If they ask you 10 to 15 questions, then your selection is high. So don't elaborate the answer too much. Set short and precise answer. If they are saying you to please elaborate, then you elaborate. Means Karo amendments, you should say full point. But if they ask you about client observation, don't give Ramayana, okay, these are the observation, this and that, I went to this road and this. Tell it precise what was the observation. Don't try to give elaborate the story that your entire interview only in that question only end up. Or even tell me something about self. Don't tell it for 5 minutes. Many people are that 5 minutes they tell me about self only. More than 2 minutes you should not say. 2 to 3 minutes. You got my point, na? तो जितना छोटा आंसर उतना बढ़िया. Many people in the nervousness they tell long answer. So don't make that mistakes. And don't try to tell the more than what is required. They might think that you're over smart. That is also very important. They asked you why Big Four and you told why shared audit. That is wrong. Why shared audit? He told why Big Four. So he will say, did I ask you this question? No. Why you say? why, they asked you why shared audit. I want to join shared audit, but I want to join Big Four. That also he said. Why you said this? I didn't ask you. Don't do that. They might think you that you're over smart. But you're not over smart, but you told them because of the tension. You got my point, now? So how much they're asking Yes. you, that much only you tell. That's why listen properly what they're asking you. They might think that you are over smart or you're not understanding what they're trying to say. In both the cases, it will not be good. So please understand if you're not understanding any question, because what happens when there is an interview, you are also nervous. So you not understand the question properly. So ask them, could you please pardon the question? I was not able to hear properly because of the internet, whatever it is. Okay, that is very important. Next thing, okay, please remember your video should always be on during the interview. Never try to off the video. Like Abhishek, you had a problem with the internet connection. Make sure that all the interviews will happen in Microsoft Team only. All interview will happen in Microsoft Team. In most of the cases, the meetings are in Microsoft Teams. So you should be very good with running Teams. Video on laptop, make sure the quality is good. Your wallpaper, this wallpaper should be there, at least clean background, because these things are checked in your interview. Any hazy background, you should not give interview from mobile also. Why? What is the reason you should not give from mobile? वीडियो ऑन कर लीजिए, आप बिकॉज दूर रहकर। नोटिफिकेशन। आप दो मोबाइल से क्यों आता है? आप अभिषेक दो दो जगह से क्यों आता है? एक वहां पर अभिषेक था। सर ओ भाई, एक्चुअली लैपटॉप में वॉइस नहीं आ रही थी मेरे। बंद कर दीजिए ना लैपटॉप से, दोनों जगह ऑन क्यों करके?
फिर उसमें यहाँ प्रॉपर दिख नहीं रहा था मुझे मोबाइल में। कैसे आ दोनों में रहा है थोड़ी बहुत दिक्कत लैपटॉप? इसलिए अभी अभी के लिए करा उन्होंने। ठीक है, तो राइट, तो व्हाट आई एम सेइंग ना, तो ऑलवेज ऑन द वीडियो एंड मेक श्योर ओके व्हेन योर लाइट शुड बी देयर फ्रॉम बोथ द साइड्स, लाइक पूजा लाइट इज कमिंग, Yank also light is coming, but Sanu light is not coming properly. So lighting is very important. सर्वन आपने वीडियो ऑन करो, सर्वना वीडियो ऑन। यस क्या प्रॉब्लम है सर्वना? वीडियो ऑन। नेक्स्ट थिंग, दिस शुड बी कट टोटल, मेक श्योर दिस इज डन, डू इट नाउ ओनली and save it on a daily basis, because if this is there then they will ask you tough questions. If this is not there, then they will ask you easy questions. Why? Because ego might be there. He has come like this only to me. He is a manager. He might be CFO of the company. He might be director. So he is saying, कैसे भी आ गया? This person has come like this only. Let's ask him tough question, and you get my point. Now what I'm trying to say. To make sure that you're professionally dressed, you're in the coat. Coat is very important. Coat. Maybe it's the hottest day. You need to be in coat. If you are in coat, this clean shaved everything, properly attired, high chances that they will take you. Even your technical round is not good, your communication is not good, personality matters, I'm telling you. So what things are mattering? Personality, communication, and your technical knowledge and your mindset. What comes in mindset? Mindset में क्या आएगा? What will come in mindset, Sarvana? sir, you mean your And how attitude, how to you are responding to all the questions. हाँ, mindset में आएगा why big four, why this, how much interested you are you serious or not? When are you showing the smile to the interviewer? Are you excited for the role? So they will see the excitement. You should be smiling a lot and giving a smiley, jolly face to an interviewer as much as possible, so that they may think you're interested also. You just not have come here for time pass. Just because a call have come, let's go there, we'll have an experience out there. If they think that you are just going there for experience, they will understand by your face only. So that's why they are asking why big four, why stat audit, why this, why that. So that's why, oh, I have come here for time pass only like this. If they see in a face also, yeah, then there is a problem. And how it will come if you're not wearing a coat? This not done, because they may think that you are casual. So these things should be done. So mindset is very very important. Okay, they might ask you, okay, why don't you join a small CA firm? Why you're coming in big four? What is the 5 years plan? What is your 5 year plan? Anybody asks, what you will say? 5 year plan. Where do you see yourself 5 years from now? क्या बोले? Probably to jump 2 promotions from. पुलिस with my क्या? 5 year, I will see myself to the top of the department in which I हाँ, interview for. और सर मतलब ग्रेजुअली मतलब अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाएंगे, एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा मोर सीनियर रोल की तरफ जाएंगे, एंड मेरे को ओवरऑल लिखवा जो देते हैं। कंपनीज की पॉलिसीज वगैरह हैं उसमें और ही जो भी हम क्लाइंट्स को या मतलब जो भी सीनियर्स को डिलीवर कर रहे हैं काम, उसमें अपनी कमिटमेंट बढ़ाएंगे जो भी रहेगा। तो Right, ये right. सारी चीजें पॉइंटेड। Where do you see yourself? This question can be asked. See yourself 5 years from now. तो वो सब नहीं बताना ठीक है, है, टॉप ऑफ द डिपार्टमेंट, आई वांट टू प्रैक्टिस, हाँ, फ्यूचर एजुकेशन, वो सब नहीं। मतलब हमें उन्हें उनसे खुद को जोड़ के रखना है, ये बोलना है। हाँ, आई वांट टू, आई एम पैशनेट टुवर्ड्स द जॉब प्रोफाइल, towards the job profile. I don't know what is the job profile, right? I am passionate towards the job profile I am applying, and I would want to be an expert in this field. Maybe it's tax audit, stat audit, taxation, whatever it is. Okay, whatever profile you're, I would be definitely try to gain expertise, knowledge in this field. In this field, whatever the field, I don't know the field, stat or whatever, and I would like to contribute. I would like to contribute to best of my ability towards firm success, towards अपने बारे में कुछ नहीं बोलना है, don't ask anything about yourself, towards the firm success and growth
आई वुड एक्सपेक्ट, अपने वाले में क्या बोल रहे हैं बताओ, अब सेल्फिशनेस आप दिखाएगा, यू विल शो सेल्फिशनेस। आई वुड एक्सपेक्ट सम चैलेंजिंग रोल्स आल्सो, आई वुड एक्सपेक्ट सम चैलेंजिंग रोल्स आल्सो in upcoming years where I get opportunity to work on, ये सब का पैसा है ये सब strategic बोलने का, decisions and all. different projects and contribute to the overall success of the firm, and my growth as well, success of firm and my personal growth as well। हम बता रहे हैं ना, एक चीज याद रखिएगा, हाँ, if you are weak in technicals but your behavior around you give any solid answers, they might think, and your personality is good, you are wearing coat, audio quality is good, audio quality is very important, many people audio quality is not good, they are not able to, people are not able to listen to only what he's saying, if video audio quality is good, your personality is good, you're looking like a CA there, you're well dressed, everything is good, and behavior question also you're properly told them, even if your technical is weak, they might hire you. So that is the thing that you you need to make sure that you are properly dressed, everything you do properly. And these areas you should not. If your technical is good and these things are weak, they might reject you. So make sure, and this is easy also now. This is very easy, right? This is one time act. This is a habit. This is nothing. This is nothing. You don't need to revise also this. Your internet connection should be good. So what are the things that you should be keeping in mind? I'm writing down also. Internet connection should be very good. Internet connection. Number 2, okay? Okay, make sure that it is Jio or Airtel, not Idea. Many people use Idea, Jio or Airtel. Best of the best internet connection. Must have your hotspot also with you. Hotspot. Must have a hotspot. Must have hotspot. मतलब होता है hotspot, mobile data if the internet is not working. Okay. Check your laptop. Check your laptop is working properly or not. Very important. Check your laptop. Practice in Microsoft Team. Practice in what? What? Microsoft. Teams. All meetings will happen in Microsoft Teams only. So you are not don't Sir, know how कुछ to. meetings हाँ, और क्या था? इसके अलावा वेल ड्रेस्ड। सर एक आध डेमो आप भी ले लीजिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हम लोगों का। माइक्रोसॉफ्ट में तो सर ये सब अभी तक ट्राई नहीं किया, करेंगे एक बार के लिए, ठीक है, कर लेंगे। वेल ड्रेस्ड, हाँ। क्लीन सेव्ड, well dressed, clean shaved, well attired, these are the things. Coat, blazer is must, if you wear blazer you will be confident, blazer is must, टाई छोड़ देना। एंड ये और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोथ्स, ओके, विच टाइप ऑफ शर्ट का कलर क्या होना चाहिए बताइए? प्लेन Plain लाइट White. सूट white is best, white और ग्रे, white best और ग्रे, ठीक है। एंड कोट ऑलवेज भी ब्लैक पैंट ब्लैक और ग्रे पैंट तो एकदम। दिखेगा ही नहीं सर। ये बात भी सही है, क्या नहीं पता, कभी ये लोग बुला ले तुमको, क्या पता ना, ट्राउजर बुला ही ले तुमको, क्या पता कभी बुलाने का मौका मिल जाए। शुड बी ब्लैक, ऑलवेज ब्लैक सबसे बेस्ट होता है, सेफ कलर है, लफड़ा नहीं करेगा कोई। These things you should be very much keeping in mind. This is not important. This is very important actually. Internet is the most important thing. Internet के कारण आदमी को, और always keep your video on. Always keep your video on. Always. Don't, because उसको लगे cheating कर रहा है, but you're not respecting that person. Always keep your video on. That person might not keep audio video on, but you will keep. Okay, you will keep your video on, and even if the other person is not putting on the video, you don't care about what the other person is doing, you need to keep your video on all the time. Why you should keep your video on all the time? What is the major reason, basic why you should do that? Why वीडियो तुमको क्यों ऑन रखना चाहिए? Why you should keep your video on all the time? Why? बस हमारा सर एक तो इंटरव्यू इससे हो रहा है अपना तो हमको नहीं। सर एक तो हमारा कॉन्फिडेंस पे दिख रहा है, ठीक है, आई टू आई कनेक्शंस बना रहता है, आई टू आई कंटेक्ट, राइट। और हमारी इंटीग्रिटी पे उन्हें जरा भी शक नहीं होता है कि हाँ मतलब cheating किसी भी नहीं तरह का करते कोई हैं। भी नेगेटिव। हाँ, हाँ, तो also ये दो it is चीजें a कहीं ना matter of कहीं respect बहुत also. जरूरी है। It is a matter of respect also.
You should always Yes, keep sir. the video on. It is a matter of respect also to the other person. Suppose Yes, if sir. there is हमें a thing, humble भी रहना है so that कि हाँ, humble भी रहना है, humble तो बहुत रहना है. Humble is the most important thing. You should remain humble throughout. You should not show any time during the interview that you are very knowledgeable. You should not. yes, sir. I have also made a lot of mistakes initially. इधर भी You है. should not never say to the interviewer that I am very knowledgeable. 5 to 6 out of 10. Be humble as much as possible. Humility is the biggest skill out here. Humility and excitement. And excitement. Never argue with the interviewer. Okay. Never argue. Never argue. बोल दे wrong, wrong. Right, wrong. Never argue with interviewer. ये होता है ना. Even if he is insulting you, maybe he is trying. Even if he is insulting you, even if he is insulting you. Sometimes some interviewers might insult you also. You don't have to do anything. When he is insulting you, you will definitely say what? You will say, I will improve myself. I will definitely improve myself on this. Definitely improve myself. Definitely improve. He might be testing you now, whether you get angry or not. Okay, I will definitely improve myself. Okay, whatever is saying, take the feedback positively. Whether it's right or wrong, don't fight. It does not really matter. Okay, so these are the things. Any one more thing I was forgetting. What was it? Was very important. एक और चीज बहुत important था. If anything you also think that is important, you can also. These are very key pointers that you should be keeping in mind. Yeah. सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे लाइक Pointers क्या in interview. I will keep this as extra sheet also. ये बहुत important है. इसको इधर ले लेंगे because ये गलती करेगा बहुत आदमी. I feel. Well dressed and clean shaved very much. I'm telling you, if you're not clean shaved, it will create a very bad impression. Key pointers will create a very bad impression if you're not clean shaved in interview. वो लोगों को लगे भाई तुम ये सब ही नहीं करके आए because they're checking this only कि you are able to deal with client properly or not. Clean shave, well attired, ये सब जो जरूरी है. Even after getting your job also ना, make sure that you do this. I'm telling you, आपको प्रमोशन वगैरह में फर्क पड़ जाएगा आपको बहुत. You need to even in job also. आपका जॉब लग गया फिर भी आपको बहुत टायर को लेके बहुत वो रहना चाहिए. आई फील ये सब चीजें देखता है सबसे ज्यादा. आपका परफॉर्मेंस बाद में देखता है. पीपल सी योर परफॉर्मेंस लेटर, दे सी योर अटायर फर्स्ट. परफॉर्मेंस बाद में देखेगा. दे विल सी योर हाउ योर फिजिकल, हाउ यूर लुकिंग. दिस थिंग्स आर चेक्ड. ओके, इन प्रमोशन टाइम ऑल्सो दे चेक दिस. Even I made the same mistake when I was. I thought ki if you are working, doing your work diligently, hard working and all, then the people do check it and they tell you also later on that your attire was not great because I did not knew ki which color of shirt we used to wear. हम check shirt पहनता था. check shirt वो सब भी चलता है. Many people use check shirt वगैरह. तो वो नॉलेज नहीं था ना सबके ऊपर में कि कौन सा शर्ट चलता है, क्या चलता है. येलो शर्ट, रेड शर्ट, ब्लू शर्ट, एनी डार्क ब्लू, डार्क रेड, एनी शर्ट वी आर वेयरिंग एंड वी आर गोइंग. तो नो आइडिया ना which कलर शर्ट टू वेयर. नो ट्रेनिंग ऑन दिस. मेरे को ट्रेनिंग बहुत लेट से मिला. 1 ईयर बाद मैंने एक जन का कोर्स किया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का. उसमें लिया भाई 5,000 रुपये दिया था उस टाइम. 1-2 घंटा का सेशन था. इतना रुपया उसने बताया कौन सा शर्ट पहनना है, क्या पहनना है. इतना रुपये का तो इतना रुपया लेता है. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का पैसा है. उसको पूछा शर्ट क्या बनाना है, वो सबका पैसा ले रहा था. मतलब पर वो चीज जरूरी था क्योंकि मेरे को एक्चुअली हुआ क्या था. फर्स्ट ईयर प्रमोशन नहीं हुआ कुछ. तो मैंने बोला सीनियर को पूछा था, बोला तो भाई प्रमोशन क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन. बट योर अटायर वाज नॉट गुड, दिस वाज नॉट, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग गुड, बट अटायर वाइज अब यू नीड टू चेक योर. तो अटायर भी देखना है हम लोग को. अटायर के ऊपर भी पैसा है. तो अटायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अच्छा क्लोथ पहन के जाएगा ऑफिस में, आपको देखना फर्क पड़ सकता है. काम भी अच्छा करना है, अटायर भी वेरी मच ऑल द टाइम. अटायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी पैसा क्योंकि मेरा ऑफिस में होता था. दे यूज्ड टू वेयर एवरीडे न्यू शर्ट, एवरीडे न्यू पैंट. मतलब कहाँ से लाते था भाई. एवरीडे न्यू ऐसे करके. तो ये चीज है, प्रमोशन में फर्क पड़ जाता है. अटायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इसको लेके एकदम वो रहना है, समझे. अभी तो वो टाइम नहीं मिलता. ये चीज का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट. अटायर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन योर ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग एंड दे चेक दिस वेरी नाइसली. ओके, तो ये चीजें अभी इंडेस आ रहे थे ना. इंडेस एक बार ले लेते हैं. ठीक है, ये हम कवर कर ले. कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगेगा तो ये ठीक है. इसमें जल्दी जल्दी था. ठीक है, इंडेस हो गया ना. इंडेस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, आइडेंटिफिकेबल एसेट क्या होता है. ठीक है, आपको घुमा फिरा कर पूछेगा, पर ये पूछेगा पूछेगा. और आर यू एसेट क्या होता है. ठीक है, ये आप कर लोगे तो आपका कंप्लीट ही हो गया फिर. 2 मिनट रुकना.
केस स्टडी ज्यादा इसको ही देता है आपको बना के, ये आपका हो जाएगा। एक तो कोई वाटर प्यूरिफायर वाला दे देता है, वीओनम दे लेगा, कैब सर्विस ले लेते हैं ज्यादा करके, और ये ठीक है। So deferred tax assets an example or हाँ impairment of land. वो हो जाएगा, वो हम अभी लेने वाले ही था बोला, इजी ले लेता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है अब। ये वो लिया, ठीक है, तुम और सजा देना। आप एक काम करना पूजा, इसको तो और सजा लेना, हम एक से मोटा मोटी किया है, इसको सजा के देना। ये जो इंडेक्स है ना, उसको तो और सजा देना बाद में, करते करते तो एक्सेल भी सीख जाएगा तुम। ठीक है। Okay, sir. ठीक है, इसको सजाने वाला काम कर देना थोड़ा, और सजा के और इजी हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आया, लाइक केस स्टडी आपको पूछेगा, ठीक है, आइडेंटिफिएबल एसेट कैसे होता है लीजेस में, ठीक है, तो वाटर प्यूरिफायर है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं, हाँ ये पता नहीं क्या है, ये इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, तो वाटर प्यूरिफायर है, तो वाटर प्यूरिफायर इज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 8 months। ओके, क्वेश्चन इज whether it is lease, no it is not a lease, it falls under the exemption low value asset less than 12 months, easy। वाटर प्यूरिफायर Okay. 8 months not a lease because if लो वैल्यू एसेट लेस देन 12 months, इजी है, यहाँ तक कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन सेकंड आता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ओला कैब का सर्विस दिया, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ये से बना देते हैं, से नंबर 1 लीज केस स्टडी, ठीक है, लीज केस स्टडीज। ठीक है, तो पहला कोई स्टडी ये हो गया, क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, ठीक है, इसमें पूछा, देख एम्प्लॉयर is giving Ola means cab services to employee, cab service to employee, like many corporates give this to employee to come to office. Now whether this is lease, whether this is lease, first. Second question, if not why, that is also, if yes or no, cite reasons, cite reasons. Second question, employer giving, ग्लोबल में नहीं पूछेगा, फिर भी करवा देते, कभी पूछ ले तो, इज गिविंग लैपटॉप टू एम्प्लॉई, ये अभी पूछा था बड़ी सब क्वेश्चन अभी रिसेंटली, इसलिए करवा देते हैं। वेदर दिस इज लीज, ठीक है, सेम क्वेश्चन, फिर इफ यस और नो गिव रीजन, इफ यस और नो गिव रीजंस। This is an ठीक है, low value asset. नो, Laptop is an आंसर low इज नो, value asset इट इज नो, इट इज नॉट अ लीज, आंसर इज, because it is आंसर, a low value asset. आंसर नो, नॉट अ लीज, बिकॉज Because it is in low value assets. this is not an identifiable asset, आइडेंटिफिएबल एसेट अग्रीमेंट, ऐसे कुछ ऐसे ही होगा। लीज का डेफिनेशन क्या है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लीज, तो डेफिनेशन ऑफ लीज उसको ज्ञान दे देना, डेफिनेशन ऑफ लीज क्या एक बार पढ़ लेना, तो डेफिनेशन ऑफ लीज ज्ञान देना पहले तो, फिर ये वाला है कि डेफिनेशन ऑफ लीज क्या है वो बता देना उसको, अगर पूछ ले तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको डेफिनेशन ऑफ लीज बता देना है, वो में क्या था, डेफिनेशन ऑफ लीज ये है। इट इज नॉट अ लीप, डेफिनेशन ऑफ लीज बता देना, डेफिनेशन ऑफ लीज क्या है एक बार देख लेना, क्या है एज पर इंडेस 116, अगर हमको यही लग रहा है यही होगा, इंडेस 116, तो इन कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल राइट टू यूज आइडेंटिफिएबल एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम For इन period of एक्सचेंज फॉर time. अ कंसिडरेशन, यही है क्या, चेक कर लीजिए एक बार, हाँ यही सर होगा, यही है डेफिनेशन. ये है ना, क्या क्या लिखा है उसमें एग्जैक्टली, क्या लिखा है वर्ड्स, इंडेस 116 क्या बोलता है लीज का डेफिनेशन, Exact word. right to use, it is a contract controlled right to use our identifiers for a period of time in exchange for consideration. Now this is not an identifiable asset, so it is not the right to use or identifiable asset. Identifiable asset क्या होता है, इट्स नॉट आइडेंटिफाइबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ऐसा कुछ, आइडेंटिफाइबल क्या होता है, द कस्टमर, आइडेंटिफाइबल एसेट क्या होता है,
एक मिनट, आइडेंटिफिएबल एसेट, ठीक है। Identifiable in monetary terms, sir. हाँ बता रहे हैं ये वाला, उसका आप डेफिनेशन ग्रुप में भी है, वो जो होता है ना लीज में अच्छा से लिखा है, भाभी चौकसी सर का देखिएगा उस समय मिल जाएगा। तो उसमें लिखा है नो रीजन नो आइडेंटिटी नो रिक्शन। और उसमें ना आपको आईसीए का शायद हम सुना है कि उसमें भी रहता है, बहुत सारा केस स्टडी रहता है आईसीए का। कोई सप्लायर सप्लायर के पास कोई एसएसआर नहीं होना चाहिए, तभी आइडेंटिफाई हो। ठीक है, ये हमेशा हो रहा है, ठीक है, ये भी हम छोड़ देते हैं, ये क्यों नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट एन आइडेंटिफिएबल एसेट, नो रिस्क एंड रिवॉर्ड इज गेटिंग ट्रांसफर, ठीक है। तो यही आंसर है इसका कि ये आइडेंटिफिएबल एसेट नहीं है, नो रिस्क एंड रिवॉर्ड, दिस इज नॉट आइडेंटिफिएबल कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफिएबल एसेट क्या होता है? The customer has obtained all the used benefits of the asset over a period of time. The supplier does not have the right to substitute the asset over a period of time. अब देखो, जो तुमको गाड़ी दे रहा है, गाड़ी थोड़ी ना सेम आएगा डेली, गाड़ी चेंज होगा, ड्राइवर भी चेंज होगा, करेक्ट। पूरा थ्रू आउट द ईयर एक गाड़ी तो नहीं होगा, ड्राइवर भी चेंज होगा। सेकंड थिंग, the customer has substantially used all the benefits of the asset over a period of time. अब तुम गाड़ी को लेके, ऐसा तो नहीं है तुम ऑडिट में है, तुम ऑडिट का गोवा चल जाते हैं, इधर घूम के हम सब्जी ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, हम अपना पर्सनल पर्पज के लिए तो गाड़ी को यूज नहीं कर सकते, खाली वो ऑफिस जाने के लिए दिया है तुमको, है ना। इट इज ओनली फॉर पर्सनल, इट्स नॉट फॉर पर्सनल। लैपटॉप है, यू गिवन अ लैपटॉप टू यूज, तो लैपटॉप इज नॉट फॉर ए पर्सनल पर्पज। तो द कस्टमर हैज सब्सटेंशियली यूज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिफिएबल एसेट। और नंबर 2 क्या है? द सप्लायर, तो एम्प्लॉयर है जो भी, डज नॉट हैव द राइट टू सब्स्टिट्यूट द एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो चेंज करके नहीं देगा तुमको एसेट बार बार, मतलब हो रहा है ना, ये चीज है। तो आइडेंटिफिएबल एसेट नहीं है। क्या हुआ बोलो? बताओ। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, दो ही चीज बना, दिस नॉट एन आइडेंटिफिएबल एसेट, नो रिस्क एंड रिवॉर्ड इज गेटिंग ट्रांसफर। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लीज का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पर ना रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है, ना ही कोई आइडेंटिफिएबल एसेट है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज नॉट एन आइडेंटिफिएबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। आइडेंटिफिएबल एसेट को ऐसे भी सोच सकता है, थिंक ऑफ इट एज अ स्पाउस। आइडेंटिफिएबल एसेट, तो कस्टमर हैज यूज्ड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द एसेट, सप्लायर को ससुर जी समझ लीजिए, तो सप्लायर डज नॉट कैन नॉट राइट द सब्स्टिट्यूट द एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे भी याद हो जाएगा। इज मैरिज अ लीज टर्म? यस, मैरिज इज आल्सो लीज। The customer has used all the benefits of the asset. The supplier does not have the right to substitute the asset over a period of time. तो ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। तो इट्स नॉट एन आइडेंटिफिएबल एसेट। एम्प्लॉयर ने कैश दे दिया, एम्प्लॉयर ने जो दे दिया, एम्प्लॉयर ने कुछ भी दे दिया, दिस इज नॉट एन आइडेंटिफिएबल एसेट बिकॉज द कस्टमर हैज नॉट सब्सटेंशियल। आइडेंटिफिएबल एसेट क्या होता है? द कस्टमर हैज यूज्ड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द एसेट, has used all the benefits, economic benefits over the period of time. The supplier does not have the right to substitute the asset. वो सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, सप्लायर चेंज नहीं कर सकता, ससुर जी चेंज नहीं कर सकते, अब नहीं है। सप्लायर डज नॉट द राइट टू सब्स्टिट्यूट द एसिड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे करके भी याद हो जाएगा आपको। तो ये चीज याद रखना, ये केस स्टडी है। दूसरा क्या आपका? तो यहां तक समझ में आ गया ना? क्वेश्चन आपको पूछा, क्या बोलेगा सरवना? सरवना को पूछते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय गिव द कैब सर्विस, इज इट अ लीज नॉट? गिव नॉट, गिव रीजन, बोलिए सरवना। No, it is not at least. वाई? वाई बोलो। तुम सुनना नहीं था क्या? वाई? यांक बताओ। Because risks and reward related to the वीडियो तो asset has ऑन कर not लो been भाई, transferred. वीडियो ऑन करो ना, वीडियो सब ऑन रखो। क्या रिकॉर्डिंग थोड़ी ना देंगे, सब चीज का रिकॉर्डिंग दे देगा तो हम लोग क्या बेचेंगे भाई? सब चीज बता रहे हैं ना? हाँ ठीक है। वाइट इज नॉट अ लीज। So because Respect here to the risks and not reward related to transferred. the asset has not been transferred. रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिफिएबल एसेट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीज? राइट टू, The lease is क्या a है? contract Right where to use an asset कॉन्ट्रैक्ट टू, for over a period of time. हाँ कुछ the है lease ऐसे करके ओवर ऑफ। दिस नॉट एन आइडेंटिटी, व्हाट इज एन आइडेंटिफिएबल एसेट? आइडेंटिटी, अभिषेक आइडेंटिफिएबल एसेट क्या होता है? Economic benefit. हम्म? क्या था वो तो इतना अच्छा से बताया था। आइडेंटिफिएबल एसेट क्या होता है? where the lessee has taken the all the economic substantially transfer benefit होगा। of the asset.
और The customer has used जो all the कस्टमर benefits of the asset. कस्ट Identifiable asset is your spouse. Think of it as सप्लाई a डज नॉट spouse. Identifiable asset is your spouse. So the customer has used all the benefits of the asset over the period of time, and the supplier does not have the right to substitute the asset for you over a period of time. The customer has used all the benefits of the asset. The supplier does not have the right to substitute the asset over a period of time. Customer पूरा use कर लिया asset को, and supplier cannot change the asset for you. He cannot substitute the asset for you. आइडेंटिफिएबल एसेट समझ गया ना? तुम अब ये मोबाइल है, मोबाइल लेता है ईएमआई में, वो भी लीज एक टाइप का, तुमने यूज कर लिया पूरा एसेट को, तो सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना करते रहेगा वो। 12 महीना का सब्स्टिट्यूट करके देगा मोबाइल? नहीं देगा। नोबडी विल सब्स्टिट्यूट द एसेट। प्लीज गिव मी न्यू मोबाइल, गिव मी न्यू मोबाइल, एनीबडी विल गिव यू नो मोबाइल। दैट्स द थिंग। तो आइडेंटिफिएबल एसेट का क्या मतलब होता है? ये पूछता है वो लोग, क्या होता है आइडेंटिफिएबल एसेट, क्या होता है? Which is not substituted by the supplier. सप्लायर The डजंट customer has हैव used all the राइट the customer has used all the benefits of the asset, and the supplier does not have the right to substitute the asset over a period of time. बोलो सर्वना, तुमको नहीं समझ में आया सर्वना? आइडेंटिफिएबल एसेट, Supplier does not have the right to substitute the asset over. सप्लायर इज ससुर जी। व्हाट यू टेल इन इंग्लिश, आई डोंट नो। ससुर को क्या बोलते हैं इंग्लिश? फादर इन लॉ, राइट? तो सप्लायर इज फादर इन लॉ एंड आइडेंटिफिएबल एसेट इज योर स्पाउस। So the customer is you. Customer has used all the benefits of the asset over a period of time, and the supplier, the father-in-law, does not have the right to substitute the asset over a period. You say कि no, I need another. ऐसे नहीं हो सकता ना? With that, the supplier does not have the right to substitute the asset over a period. The customer has used all the benefits of the asset. The supplier does not have the right to substitute the asset for you over a period of time. But this is an identifiable lease का definition, which you can identify. अब क्या होता है? In the case of Ola cab, employee is giving you 2-day car. Tomorrow same car will not come, na? Car will change, driver will change. If the car is also not changing, driver is not changing, and he can use the car to any extent. You can use it for personal purpose also, anything, then it is a different thing. Means it's identifiable asset means the customer is using all the benefits of the asset, पूरा use कर दिया उसको, and the supplier cannot substitute the asset for you over a period of time. गॉट माय पॉइंट ना? ये पूछता है ये आइडेंटिफिएबल लीज क्या है। अब क्लियर हो गया ना आइडेंटिफिएबल एसेट क्या होता है? पूजा बोलिए फटाफट। The customer uses all the benefit of the asset during the year, and supplier cannot substitute the assets. Does not have the right to substitute the asset. Not the substitute of the asset. राइट नहीं है उसके पास, फिर करते रहेगा ये सब चीज, है ना? इट डजंट हैव राइट टू सब्स्टिट्यूट द एसेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एंड द कस्टमर हैज सब्सटेंशियली यूज। अब वर्ड खाली सब्सटेंशियली लगा दीजिए, पूरा तो कभी कोई यूज कर ही नहीं सकता ना, सब्सटेंशियली यूज करता है। तो सब्सटेंशियली यूज ऑन व्हाट? इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द एसेट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द एसेट। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ना है, हो गया। ये वाला चीज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, ये वाला आपको, दिस इज अ डिफिकल्ट पार्ट कि आइडेंटिफिएबल लीज इज व्हाट। नेक्स्ट थिंग दैट दे विल आस्क यू इज द फाइनेंस लीज जो होता है, फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस लीज का व्हाट आर द 5 कंडीशंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इजी, यू हैव डन सो मेनी टाइम्स इन योर सीए फाइनल आल्सो। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट द एंड ऑफ द टर्म, इजी। एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर का है, it is a very specialized nature. Lease payments comprise mostly 90% of the minimum lease payment. All payment have been done. Lease term covers major part of the asset. एक तो पेमेंट का हो गया, एक टर्म्स का हो गया, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर, परचेज ऑप्शन इज एट द लोअर प्राइस लेटर ऑन। अब 3 भी बोल देगा तो ले लेगा आपको, बोलेगा एक बार के लिए। सर्वना बोलो तो फाइनेंस लीज का 5 कंडीशंस, 5 कंडीशंस ऑफ फाइनेंस लीज। अरे ये तो करके आया भाई सीए फाइनल में भी, दिस वाज देयर इन द सीए फाइनल आल्सो, फाइनेंस लीज 5 कंडीशंस, yes also it was there. Sir, but purchase price is not. Two हमको tell me 2 reasons, 2 conditions of finance lease. तो सानू बता देगा, सानू बोलो
2 conditions of finance, 5 conditions. म्यूट में म्यूट में भाई म्यूट जो लीज रेंटल्स होते हैं वो इंग्लिश value. सर अपना फिर रिपीट करेगा इंग्लिश में बोलो हाँ लीज रेंटल्स ऑफ these commercial value of the our assets. ठीक है Can these पूजा बोल period देगी पूजा period 5 पॉइंट बोल देगी पूजा सारा पॉइंट बता देगी पूजा यस The first is ये specialized nature of assets होता है. The specialized nature. इंग्लिश Second होता है payment. इंग्लिश Payment term 90% in payment. So 90% payment will be recovered during the lease period. And a specialized nature of assets होता है. The third one is ownership will be transferred at the end of the lease period. And the fourth one is कि major part of the assets will be used during the period. And मेजर the टर्म last ऑफ द one एसेट is हियर हाँ yes. And Lessee the has the last one option will to be परचेज purchase ऑप्शन the एट अ asset. लोअर प्राइस परचेज ऑप्शन एट लोअर प्राइस Yes. इजी है ओनरशिप एट द एंड ऑफ द पीरियड परचेज एट द लोअर प्राइस इट्स लाइक एन हाउस आल्सो ना ओनरशिप मिल जाएगा ईएमआई में हाउस कितना है ओनरशिप एट द एंड ऑफ द पीरियड परचेज ऑप्शन एट लोअर प्राइस the lease term covers major portion of the portion of the asset you buy a house okay you buy a house on EMI and you get a loan of 30 years 20 years so that covers the major part of the portion of the house na you buy a house for you get a house on loan on 20 years, so that is covering the useful life of the asset. And then what is there? Lease payment. So you're paying that EMI. So lease payment covers almost everything. 90% of the minimum lease payment of the asset. The lease payment के ऊपर में है. Lease term is there. Easy question, very easy. You just apply house. House को देखे सब कुछ याद दे देगा. An asset is a specialized nature. House तुमको ही घर क्या काम के लिए लेते हैं? सोने के लिए लेते हैं. उसको और कोई काम तो करने के लिए लेते ही नहीं आदमी. खाना पीना सोना के लिए देता है. So asset is a specialized nature, right? The asset is a specialized nature. And not by the end of the term. ये वाला पूछ लेता है वहां पे इजी है भाई इजी क्वेश्चंस है पर आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज द ओनली थिंग ठीक है बस यही है बस और कुछ नहीं है इसके अलावा आई थिंक दिस इज डन लीज में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपको लीज में आपको ये फाइनेंस लीज ये कैब सर्विस और आपका ये लीज का डेफिनेशन और आपका ये इंडिया से ये डिस्काउंट रेट लेसर आईआरआर इज नॉट लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट सर्वना आई नीड दिस ओके फ्रॉम यू ठीक है और apart from this there's nothing one thing that is very important journal entry in the books of journal entry Lessee. entry in books of lessee this is very much asked and lessor ठीक है लेसी का क्या होगा इसका क्या होगा ये चीज एकदम पता होना चाहिए लेसोर ठीक है क्या होगा गूगल टेल लेसी का बुक्स में So are you asset account debit to ROS to lease liability? lease are liability. you asset to Account debit lease to liability lease liability. easy then number 2 Then number 2 we have to charge interest on the lease liability depreciation and depreciation charge charge on होगा RU asset. asset होगा तो depreciation easy don't To try to ROU. remember this very easy number 3 इतना ही बोलते तो ले लेगा वो और क्या होगा And charge interest on the lease liability. Recognize interest on the lease एंट्री liability. एंट्री बताओ एंट्री So Finance for cost what? to ROU Interest to lease Interest liability. Interest account debit to lease interest liability. expense to lease liability. इंटरेस्ट टू लीज लाइबिलिटी गुड और Then payment after then payment P&L होगा will be ना made. प्रॉफिट एंड लॉस Profit P&L account debit to depreciation and interest. टू डेप्रिसिएशन And एंड टू interest. Interest. यू सी वन थिंग Then ओके lease Then देखो action lease अगर payment. तुम liability ध्यान to देगा bank. थोड़ा क्या अगर तुम ध्यान देगा इफ यू सी वेरी प्रॉपरली तो दिस डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट रेंट एक्सपेंसेस गुड सेम आ जाना सेम लिंक में वापस कम इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट बाय इंड AS 116